guys, welcome back to my channel. Hope you're all are doing good. So आज का प्रोग्राम था इवनिंग में पकोड़े बनाने का. उस दिन रेनी डे में तो बने नहीं थे पकोड़े. एंड दिस इज माय फ्रेशली पिक्ड मिंट फ्रॉम माय किचन गार्डन. तो मैंने इसको वॉश करके अच्छे से धो के इसकी लीव्स अलग कर दी हैं. अब चटनी के लिए इसमें मैं क्या करी हूँ, क्विक चटनी बन रही है. इट्स नॉट समथिंग लाइक यू नो फैंसी. इसमें एक छोटा कटा हुआ प्याज है और इसमें हरी मिर्च है. और इसमें मैं नमक वगैरह बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी. ये है थोड़ा सा पानी, लेकिन वो मैं इसमें डाल देती हूँ. ओके गाइस, आई नो बनता तो ये ग्राइंडर में है, लेकिन मेरा ग्राइंडर अभी मैंने चला के देखा, इट वाज नॉट वर्किंग. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. सो मैं आज इसी में ही बनाऊंगी. यू सी द थिंग इज, अब खाना तो है, इसको चटनी तो खानी है. सो खाने से मतलब है, और मैं जिसमें भी बनाऊँ वो डजंट रियली मैटर. इन एंड ऑफ द डे चटनी बननी चाहिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम है पकोड़ों का. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है. अगर थिक लगेगा तो बाद में मैं ऐड कर दूंगी. सो आज और नमक, और इसमें नमक डालूंगी मैं, रेड मिर्च डालूंगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा लेमन डालूंगी, और उस पर रेडी हो जाएगा ये. सो अब मैं बनाती हूँ चटनी. सो गाइज, दिस इज माई मिंट चटनी. मेरी मिंट चटनी रेडी हो चुकी है. और एज आई टोल्ड यू, इसमें मैंने बाद में 1 small onion तो डाला था. एंड यू ऑल्सो सॉ दैट आई पुट लाइक 2 green chilies. And then later on I added 1 small half cut lemon, and then some salt according to your taste. और लाल मिर्च डाली थी. एंड आप चाट मसाला डाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल. ओके, नाउ लेट मी शेयर विथ यू माई सीक्रेट. नाउ दिस आई हैव नेवर शेयर्ड बिफोर, बट जस्ट फॉर माई फ्रेंड्स दोज हु आर वाचिंग. इफ सी, देयर आर 2 ways to make it tangy. या तो आपके पास रॉ मैंगो, इधर यू हैव अ रॉ मैंगो, यू कैन पुट दैट. इफ यू डोंट हैव अ रॉ मैंगो, यू ऑलवेज पुट मे बी लाइक यू नो लेमन, you can put lemon to make it tangy. But if you don't have both of these things, and you have to make it, then what you can do is very small, like maybe a half teaspoon of lemon, oh sorry, not lemon, I'm sorry, half teaspoon of vinegar will make it tangy for sure. So मेरे पास, और मैंने ये ट्राई किया हुआ है खुद भी. कई बार क्या होता है, you know, sometimes I have guests and I have to make snacks for them, and I don't have, because mint chutney is something everybody is so favorite of, like you know, it's a favorite chutney of everyone, you know, in our family, friends, everywhere. So अगर मेरे पास, even if I don't have raw mango or lemon, I add just like half teaspoon of some vinegar. So I'll start with my pakoras now, fritters. और मैं पकोड़े बनाऊंगी गोभी के, that's cauliflower, and eggplant, that is bangan, and what else, potatoes, that is aloo. Okay, so let's get started. So guys, मैं अब तैयारी कर रही हूँ पकोड़ों की. और इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक रेसिपी डाली थी कड़ी पकोड़े की, और उसमें जो पकोड़े बनाए थे उसका सेम ही उसके मसाले हैं. बट मैं क्विक आपको रिव्यू दे देती हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया. जिन्होंने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च, सूखा धनिया, दैट इज कोरिएंडर, एंड जस्ट आमचूर डाल सकते हैं, बट आमचूर नहीं हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं टू मेक इट रियली चटपटा. और यही थोड़े थोड़े मसाले आई विल बी पुटिंग in these vegetables. थोड़ा सा, but in these I'll be putting very little, just to kind of marinate it properly, so that when it is done, when you eat, you know, the masala आए, अच्छे से चटपटा मसाला आए. So what I did is I washed all the vegetables first. That's the first step. That's the first step. You wash the vegetables. और vegetables मैंने कौन से लिए? Eggplant, that is bangan, cauliflower, that is gobi, and potatoes, that is aloo. ये 3 vegetables लिए हैं. आप ऑप्शनल है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, but I'm just making out of these 3. So I'm again just putting quickly little bit of salt, not much. Again, coriander powder, not much. Red chilies, not much. And chaat masala, not much. Okay guys, so after putting all these spices, make sure to wash your hands. Either you can wear gloves, or you can wash your hands properly with soap, because we are going to mix it. You can always use a spoon to mix it if you want, but I just prefer hands sometimes. But yes, please make sure that you wash your hands or you wear gloves. And you know what, we really need to be hygienic when we make all this stuff.
So yes, here it goes, and then again wash because it has red chili peppers, and if it goes anywhere in your eyes or here and there, trust me, it's going to be really, really very bad. So yes. So guys, तेल मेरा गर्म हो चुका है. See, I'm using canola oil. You can use vegetable oil, or also you can use mustard oil. But make sure that when you use mustard, it has to be really, really hot. I mean, you know, until you just see the smoke coming out of it. So yes, I'll just start with it. And please make sure, keep your children away, because this is really, really risky, because the oil is really hot and you have to be really careful when you do this. And make sure your kids are not around, so that I don't want them to be like, you know, hurt or harmed. So, and even we have to be careful as well, because the oil is really, really hot. So my oil was really hot. So what I did was, मैंने थोड़ा सा इसकी गैस को कम कर दिया था, क्योंकि जल ना जाए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अंदर से भी पकें, बिकॉज यू नो मैन योर ऑयल इज़ रियली वेरी हॉट. तो ऊपर से तो लगेगा इट विल बी ब्राउन, बट अंदर से नहीं पके होंगे. सो मेक श्योर कि ऑयल पहले तो गर्म करें, उसके बाद गैस को आप थोड़ी सी कम कर दें, बिल्कुल लो भी ना करें, क्योंकि वी नीड द राइट टेम्परेचर to fry it, because इसमें vegetables हैं and we haven't steamed or boiled the vegetables. We are using vegetable as it is, so make sure the temperature is right for frying. So guys, I just love the sizzling sound, मुझे बहुत अच्छी लगती है. So ये डन हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि रेडी होके कैसे लगेंगे. So let's wait for it and I'll be back.